انسان فطری طور پر متجسس پیدا ہوتا ہے. یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ان سب سوالات کا جب تک وہ جواب حاصل نہیں کر لیتا اس کا ذہن اضطراب میں رہتا ہے. اسی تجسس سے جستجو جنم لیتی ہے اور جستجو سے آگہی ملتی ہے، اور آگہی کامیابی کا حقیقی زینہ ہوتی ہے. اسی آگہی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایس ڈی سی کی برینڈ نیو پوڈ کاسٹ جستجو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سر کسی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں. وائس چانسلر مسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس جاوید، ستارہ امتیاز ملٹری. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ٹیل اس اباؤٹ یور ارلی لائف. وہ کیسا وقت تھا؟ بڑا اچھا کویشچن ہے. اچھا وقت تھا. وہ وقت آج کل کے وقت سے جو ہے نا اگر میں کمپیئر کروں تو بہت اچھا وقت تھا. محبت تھا، پیار تھا، بڑے فیملی اسٹرانگ بانڈ تھے، اور اوور آل ایجوکیشن جو ہے وہ جو بیسک ایجوکیشن ہے بڑی اسٹرانگ تھی. اور ہمارے اسکول جو ہیں کوئی ایجوکیشن کا کانسیپٹ اس کے اندر کچھ جو ہے نا ٹیوشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. ایجوکیشن اسٹرانگ تھی اور ٹیچرز جو ہے وہ فلی کمیٹڈ تھے، ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے، کوئی پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. تو جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے اس خطے میں ایجوکیشن 60s کی، 70s کی اور 80s کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ بہت اسٹرانگ رہی ہے. اور اس میں لوگوں نے کانسیپٹ گین کیے، اور الحمدللہ مجھے بھی بڑے اچھے ٹیچر ملے. اور جو میری بیسک ایجوکیشن ہے وہ بھیمبر سے کوئی 14 کلومیٹر جو ہے وہ نارتھ ایسٹ کی طرف جائے، میرا ایک گاؤں ہے، تو وہاں سے میں نے پرائمری ایجوکیشن حاصل کی. اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول دندڑ کلا میں آیا، جو کہ کوئی 8-10 کلومیٹر جو ہے وہ بھیمبر سے ایسٹ کی طرف ہے. تو بڑا اچھا ادارہ ہے، آج کل انٹر کالج ہے. سر کوئی ایسی چائلڈ ہوڈ میموری جسے ابھی بھی آپ سوچتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے؟ یہ بہت میموریز ہیں، لیکن ہے کہ جو سب سے اچھی جو میری میموریز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ایگزام نزدیک آتے تھے تو ہمارے جو اسکول ہیں اور جو ہمارے کالج ہیں اس میں رونق لگ جاتی تھی. شام کو ہماری ایکسٹرا جو ہے نا ٹیچر کے ساتھ سٹنگ ہوتی تھی، اور ہم چھوٹے تھے اور ٹیچر جو ہے وہ ہمیں بٹھاتے تھے، ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے، اور ہمیں کوئی کبھی احساس نہیں ہوا کہ جی کہ شاہ ہوگی. اور وہ ہمیں وہ جو ہماری گرومنگ ہے وہ بہت زبردست تھی. اور میں جو اس کا جو سنہری پارٹ ہے، جو سب سے خوبصورت پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ہے بزرگ تھے، تو ہم سب کے جتنے بچے پڑھتے تھے تو ہماری جو ہے نا جو مائیں ہیں وہ ایک ایک کر کے تو ڈیز مقرر کیے ہوئے تھے کہ آج ہم کھانا ٹیچر کو دیں گے، آج ہم دیں گے. تو کھانا تیار کر کے تو اسکول پہنچاتے تھے، ہم سارے کھاتے تھے اور انجوائے بھی کرتے تھے. اور اس طرح جو ٹیچرز ہیں وہ لینا نہیں چاہتے تھے، کھانا کھانا نہیں چاہتے تھے ہماری طرف سے، لیکن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا ماحول تھا کہ میں آئی اسٹل ریممبر کہ میری امی جو ہے جب کبھی بھی اسکول کے لیے کھانا لے کے آتی تھی تو سارے لوگ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے. اور وہ میموریز ایسی ہیں جو کبھی بول نہیں سکتے. What was your first job? ویل میں جو ہے جب میٹرک کیا تو میری بورڈ میں میرپور بورڈ میں یہ میٹرک میں 1974 میں پہلا میٹرک کا ایگزام جو ہے وہ میرپور بورڈ نے لیا تھا، نیا بورڈ بنا تھا. تو میں نے اس میں پوزیشن حاصل کی اور کافی مشہوری ہوگی کہ جی کہ بھیمبر کا لڑکا جو ہے اس نے بورڈ میں پوزیشن لی ہے. سردار عبدالقیوم صاحب جو ہیں وہ ہمارے اس وقت کے جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ تھے جے کے تو انہوں نے میڈل دیے. تو اس میں جو ہے جب میں بھیمبر کالج میں نے ایف ایس سی کی تو میں نے چونکہ ٹاپ کیا تو میری الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کی خواہش تھی. لیکن الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے آزاد میں شاید آپ کو پتہ ہے ایک نامینیشن بورڈ ہوتا ہے جو نامینیٹ کرتا ہے سیٹیں. تو میری ایک ہی چوائس تھی انجینئر یونیورسٹی لاہور کی.
तो पता लगा कि ये वहाँ जाने में जो नॉमिनेशन में 1 साल का प्रोसेस है, 1 साल हर स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है। तो इसी असरा में जो है वो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, तो उसने कहा जी कि तुम 1 साल जो है वो अपना टाइम ज़ाया करोगे तो हम आपको साइंस टीचर लेते हैं। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर इन इंटर कॉलेज खंडार। ये उस वक्त उसका नाम इंटर कॉलेज खंडार था, आज का नक्याल जो वो है उसको फतेहपुर नक्याल। तो वहाँ मैं गया और वहाँ मैं तकरीबन 11 महीने तकरीबन साल जो है वो वहाँ साइंस टीचर रहा। मैंने 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाया। तो इतनी देर में जो है वो नॉमिनेशन बोर्ड ने चूँकि प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ था, तो मेरी क्लासेस शुरू हुई थी। फिर मैंने रिज़ाइन किया और मैंने यूटी लाहौर जो है वो ज्वाइन की। तो मेरी फर्स्ट जॉब जो है वो 1976 टू फरवरी मार्च 1977 ये नक्याल में थी। आफ्टर डिग्री डूइंग मास्टर्स वर्सेस फाइंडिंग अ जॉब। देखिए आज कल जो मैं कंपेयर करता हूँ, जो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कंपटीशन है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो जो बच्चे बैचलर करने के बाद आजकल जॉब की तरफ जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली कम हैं आजकल। और बच्चे जो है वो जब उनको जल्दी जॉब नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर जॉब मिलती है तो वो उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिलती बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनीज के अंदर, हमारे इदारों के अंदर। तो लेकिन जिनको मिलती है वो जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा मैटर करता है। और जब उसके बाद वो मास्टर्स करते हैं तो वो प्रोफेशनली ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी टू यूथ कि जो ही आप बैचलर करते हैं और अगर आप मास्टर कर लें तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना बहुत बेहतर हैं विद इन कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल, क्योंकि मास्टर्स कपल्ड विद बैचलर्स, इसमें जहाँ कहीं भी आप जिस दायरे में जाते हैं तो एक आपको बेहतर पोजीशन मिलती है, और दूसरा ये है कि ये लॉन्चिंग पैड है कि आप आगे जो है ना प्रोफेशनली जल्दी ग्रो करते हैं, और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। फिर आपका जो विजन है वो इतना कंपेयर टू योर अदर कोलीग्स वो इतना अच्छा है कि आप माहौल को बड़ी जल्दी, जो आपके दाएं बाएं जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने इदारे हैं, जो जितने आपके साथ कोलीग्स हैं जो बात कर रहे होते हैं, आपका लेवल वो होता है, उसकी वजह से जो है वो बड़ी ईजीली अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड अपॉन योर नॉलेज आपकी मोबिलिटी शुरू हो जाती है, और जिससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ भी अच्छी होती है, और ओवरऑल आप एंजॉय भी करते हैं अपनी जॉब को। हाउ डिड यू एंड अप कमिंग टू मस्ट? गुड क्वेश्चन। मैं देखें जी, जब मैंने BS इंजीनियरिंग की, देन आई डिड BS इंजीनियरिंग विद गुड पोजीशन, देन आई जॉइंड आर्मी एज कैप्टन, और आई वाज लकी दैट आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम University Grant Commission. At that time there was no higher education commission, so there were only 25 scholarships abroad in computing. So I applied for that, and I was lucky that over 37,130 people they applied, and I got that scholarship from a University Grant Commission, Pakistan. Army paid me, and I went to United Kingdom to do my master's and PhD. So once I came back, so it was good, to see that so many opportunities were available, and I really, I am grateful to Pakistan
grateful to University Grant Mission that after doing Masters and PhD, I was engaged in establishing NUST, and the NUST came into being in 1992, and I came to Pakistan after completion of my PhD in September 91. So we worked and got NUST, charter approved, and then I stayed at NUST for 25 years, and I was happy. The moment I retired, I got a retirement from NUST. So I next day, without any gap, I retired on 15th of July 9th, 2015, and on 16th I had a new job next day. So I was Vice Chancellor later on at High Tech University. So, colleagues from AJK, they said, you have served for 36 years in Pakistan. You are son of the soil. You have responsibilities for AJK as well. So we think you should contribute for education in AJK. And they went to my house and they said, you must come to AJK. So I think that was the right decision. I applied and I was appointed Vice Chancellor Mirpur University. So I think that was, to me, it's good to come to this area and serve over here for the betterment of education. वीसी सर की फेवरेट मूवी कौन सी है? मैं मूवीज नहीं देखता, ठीक है ना। ये बड़ा जो है वो ऐसा क्वेश्चन है कि ये आप समझे कि जी के मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे somehow the others, मेरे बच्चे देखते हैं, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको सुन के बड़ी हैरानी होती होगी, आई हैव गॉट नो इंटरेस्ट। सर दूसरा क्वेश्चन है कि मस्ट और नस्ट में क्या सिर्फ एम और एन का फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। ये एम और एन का फर्क नहीं है। देखें, नस्ट जो है उसकी जो है वो जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बड़ी साउंड फुटिंग के ऊपर हुई, और उसमें जितने इंस्टीट्यूट बने, नाउ देयर आर अबाउट 21 इंस्टीट्यूट एट नस्ट, and NUST has never ever compromised on the quality of education, and NUST has a large number of applicants for admission in different programs. So they select cream of the country, and they also select the best of the best faculty, by paying them the pay package which is compatible with their experience and qualification. So they have the laboratories and the infrastructure which is of very high quality. Now, once you have got this base available for the students in Pakistan, and the quality of education, quality of research and innovation which goes there, there is no match. And that is the basic reason that NUST has emerged as a leading university in Pakistan, and it has also it is visible at the global level. So it doesn't come so easily. It comes once you have got facilities and qualities and standards available of international level. So MUST has the capability, it has that particular spark, but it will take a lot of time because the resources which are available at NUST, those resources are required to be established at MUST, and for that purpose, a lot of funding and a lot many other things are needed. I have talked to the president of AJK, and he is quite helpful, and we need to speed up in modernizing our laboratories and providing more facilities
right, for our faculty. And our faculty, many our faculty members are highly qualified, and they have the niche, and they have the capability to do good work, right, at MUST. But those resources which are needed, I have been promised that the government of AJK will also, right, inject some of the financial resources into it. So if we get those resources, right, I'm sure that the gap which is there between NUST and MUST, it will be, right, reduced with times to come. It cannot be, right, reduced quickly, but it will take time. But one of the student was curious कि वाइस चांसलर सर की पे कितनी है? Well, ये जो वाइस चांसलर की पे है, ये तो एक हायर एजुकेशन कमीशन ने एक पे पैकेज दिया हुआ है वाइस चांसलर को, और उसके मुताबिक जितने भी वाइस चांसलर हैं विद इन पाकिस्तान, AJK, ऑल यूनिवर्सिटीज, ऑल प्रोविंसेस ऑफ AJK, वो उसी को फॉलो करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ AJK में जो हमारे चांसलर हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो भी, उन्होंने भी वही पे पैकेज जो है अडॉप्ट किया है फॉर ऑल वाइस चांसलर्स ऑफ AJK यूनिवर्सिटीज। अभी व्हाट इज द पे पैकेज? इट इज द पे पैकेज ऑफ TTS फैकल्टी, जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम के ऊपर हमारी फैकल्टी है, जो प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर की जो सैलरी है, तो वाइस चांसलर जो है ही गेट्स दैट सैलरी। जो एक मेरा प्रोफेसर है, उसकी एक जो सैलरी है, जो कि बिकॉज वाइस चांसलर इज सीनियर टू ऑल द प्रोफेसर्स, तो उसकी जो बेसिक मैक्सिमम पे सैलरी है उसका वो मिलती है, प्लस 20% उसको विश अलाउंस मिलता है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोफेसर हु इज द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, वट एवर पे इज गेटिंग, राइट, 20% मोर is given to the vice chancellor. This is a simple formula given by the HEC. It is not, right, devised by any university, और कोई यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी खुद अपना वो कुलिया बना के किसी VC को तनख्वाह नहीं देती है। उसके मुताबिक ये कि जो TTS, अगर TTS की पे गवर्नमेंट ने वो लिमिट बढ़ा दी तो VC की तनख्वाह बढ़ जाएगी, अगर उन्होंने नहीं बढ़ाई तो वही रहेगी जो है। एक्सीलेंट सर। UET मीरपुर मस्ट के बारे में जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी ये नेम सजेस्ट किया गया था कि इसको UET मीरपुर के तौर पर यहाँ पे लॉन्च किया जाए, तो क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ सर? देखें, ये जो मैंने सुना है कि UET पहले जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज था और वहाँ से इसको UET बनना था, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी का एक्ट पास हुआ तो उसमें UET नहीं थी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मेरी पर्सनल राय ये है कि जिन लोगों ने ये विजन ली थी कि UET मीरपुर नहीं होनी चाहिए, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बड़ी सही डिसीजन था। इट वाज राइट विजन ऑफ दोज पीपल। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ कि अगर ये UET मीरपुर होती तो इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चला रहे हैं, इंजीनियरिंग पूरे मुल्क के अंदर बैठी हुई है, तो इस वक्त सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो बैठे हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स अदर फील्ड्स, तो उसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। आप यू सी, राइट, दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैड ओनली इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, दे आर फाइनेंशियली, राइट, इन ग्रेट डिफिकल्टीज नाउ। Once we look towards right, that MUST, Mirpur University of Science and Technology. So engineering are 5 programs. We have got 5 departments. Now non-engineering, we have got more than 75 programs which are there. Now this university is surviving because financially it is able to pay salaries to the faculty because of the other programs. You just see nowadays that electrical engineering, we have 120 seats available, but students are less than 60. Similarly, see other disciplines of engineering. Whereas I shift, you can just see that the number of students in computer science, house is full. Number of students in IT,
number of students, right, in medical sciences, in health sciences. You see, right, MUST Business School is all BBA programs, master programs, houses full. Over 850 students there. They are generating revenue, a lot of revenue. Similarly, right, if you look, right, the programs, international relations, right, this program is making a lot of students are coming into this particular area, and these, many other programs. So these programs are basically the backbone, right, of this university nowadays. So I think, those people who say that it should have been UET or only engineering programs. So I would say that it would not have been good decision for the university. Number one, it is not only the financial matters. It is that the area, the youth of this particular area, the youth of AJK state, they have the right to study in different fields, not only for engineering. If they do not get admission into engineering programs, still they have the right to get admission into other subjects, other programs, other fields. So this university has now opportunities available to all of them. So this is a good decision, and we must, right, appreciate effort of those people who made it must. You already addressed some part of my next question, which was related to the engineering departments. So कुछ स्टूडेंट्स हैं सर इंजीनियरिंग के अंदर, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए, उनके अंदर ये तासुर पाया जाता है कि यूनिवर्सिटी मोर टुवर्ड्स द साइंसेस प्रोग्राम शिफ्ट हो गई है, हालांकि जो इसका बेसिक्स जहाँ से स्टार्ट हुई थी दैट वाज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग। ये देखिए, एक तो ये तासुर बड़ा गलत किस्म का है जी कि इंजीनियरिंग कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। ये बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता। इंजीनियरिंग, राइट, इन एनी कंट्री it is one of the strong profession, and if you don't have engineers, you will not have strong foundation of the country. So we need to have engineers, right, in AJK, in Pakistan, all over the world. And my only focus is that we should not be only limiting ourselves towards engineering profession, because the job opportunities in engineering are not that much as compared to job opportunities in other fields. So there are so many other fields which are available. So if we only, right, remain focused, right, towards medical and engineering, then so many people, maybe 10% of the whole lot get admission into medical and engineering. What about other 90%? There should be universities where they should be studying. So in this particular area, it is only Mirpur University of Science and Technology. You start from Bimber, Port Jamwal, Champ, and you go to Samani. You go this complete Panjeri, Karri complete area. Then you go up to North, Dadiyal, this whole area up to Mangala. This is so many people. So you think they will only be doing medical and engineering? No. They have, right, they should have the opportunities to study, and this is the only university, right, which is available in this particular area. So I am myself an engineer, and I strongly believe that we should have engineering education. But my viewpoint as a vice chancellor is that we should not, right, only think about engineering profession. We should think other sciences field and arts and humanities, which are also essentially required, and they are needed within the state. There are so many job opportunities, and there are so many other things which are to be covered, and the universities have to provide the education in that area. So that's why Mirpur University is providing that platform to all those the applicants, right? They can come and they can study over here. Engineering, right, will flourish, but it will remain, right, with the limited seats, because this is not my decision. It is decision of Pakistan Engineering Council that so many seats have to be allocated to each university or institute, so that we don't have surplus engineers and surplus doctors, and afterwards we are not able to provide them the job. As well as opening of more engineering disciplines are concerned, so already I have submitted a case
to Pakistan Engineering Council, you cannot start any program unless you have got the approval from Pakistan Engineering Council. So new program, in energy engineering, it is under evaluation, and the team is we have deposited all the requirements. We have submitted all the documents, and we have met all the required parameters which are needed by Pakistan Engineering Council, and I believe that the Pakistan Engineering Council team will be coming to see our facilities to start and engineering in energy engineering within the next 2 to 3 months, maybe earlier than that. Similarly, we are also starting information and security engineering. Again, we have submitted the case, and it has been, and all things have been designed. All the facilities which are needed, and especially the faculty, we have arranged that faculty, and I think again within the next month or so, we will be having visited. These two new programs, inshallah, we are planning to have intake of students in fall 2023. I am myself a part of civil engineering department, so I experience this every day whenever we are trying to get into the transport, the buses. So there is a huge influx of students, and I don't know if the buses can carry that capacity, and it's like a fight of survival. So I believe that when the plan was made to shift law and civil department to Jerikas, there must have been some sort of a transportation plan. What was it, sir, and why is it not up to the required mark? The transport facilities which we have, a number of buses, they are flying on different routes, and we are meeting the requirements of students bringing into MUST. Now, all these 14 buses, they reach from their different routes to university, at about 8, 15, 18. And some buses reach much earlier than that. Now, getting the right students from city campus to Jerikas and from Jerikas to city campus, we have a transport option. We have a transport company within MUST, and they are looking after this transport. The people, the faculty who are involved, So they, basically they have worked out that what will be the timings of the buses which will be leaving from Jerikas to city campus, Mirpur, and from city campus to Jerikas. So approximately, I think it's about 20 kilometers distance from this place to main city. Now we have set the timings, and say buses leave from Mirpur at 8. They bring these students over here, and then there is a plan that the buses will be leaving at intervals, say at 10, 1 or 2 buses, from Jerikas to Mirpur, then again from Mirpur. So that plan has been made, and nowadays if you see that the bus which goes from this place to Jerikas and comes back, you see the fuel cost which is involved, and then you work out on monthly basis, and it is not in thousands, it is in hundreds of thousands fuel cost. So the complaints which I get, and I meet with students, and it's a good you have raised this question. No university can run a bus on any route at any time. No, certain timings are given, and then bus can move, either from city campus to Jerikas campus or Jerikas campus to city campus. Now, students with the complaints which I get, that they say that whenever we get free from the class, the bus should go. So we have anywhere to go to. We have big universities in Pakistan. We go to Punjab University, we go to Lahore. I am a graduate of Lahore, and their buses are over 60. But there are timings. We used to follow those timings. If bus is going to leave
at 11, so we used to be there at 10:30. And at 11 or 11:05 or 11:10, the bus would be where we would go. Then if we go to, say, Gulbarg, Lahore, there was a route from UT Lahore to Gulbarg, Lahore, UT Lahore to Nargadi, so UT Lahore to Samnabad, UT Lahore right to Model Town. So we used to, wherever we wanted to go, we had that. Maybe it is 11, and we know that bus has to go at 4. We will wait till 4. But here, that culture has to be built. Now we cannot run buses carrying 10, 15, whereas seating capacity is 64 or 62 or 60 or 52. So that is for us to work. Timings have been given. If all those timings bus capacity is 64, students are 200 or more than 62, and they cannot be taken to city campus, then I agree with them putting another bus there. But as for information of the transport officer, that buses which are going that rarely the students are more than that. So normally I think we have to use our resource of transportation, which is bus, logically and economically. But is it possible to provide some sort of sheds or umbrellas for the students who are waiting for the bus? Because it is very harsh, in the sunny day to wait for the bus. This is a good question. I think we should. I would request to make the committee, and we should, because we have shifted towards Lagos campus, we need to have such facilities. And I think in this particular area, I would request that we have got good students committees. You should come forward, make a plan, and we can work it out. This is a good suggestion. How do you keep informed about the student problems? Like, आप अभी जिस ओहदे पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हर चीज़ के ऊपर नज़र रखना या हर चीज़ को कवर अप करना, क्योंकि देयर आर सो मेनी लिटिल थिंग्स. ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स ये क्या रोल प्ले करता है सर स्टूडेंट्स की ओपिनियंस को या उनकी प्रॉब्लम्स को आप तक कन्वे करने में? जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है और जो डीएससी की डिपार्टमेंट हम करते हैं, उनका बेसिक रोल ये है कि दे शुड रिमेन very close to the students, and they should facilitate the students, they should help the students. Now, you said we need to have some sort of shade for our students who are waiting for the buses. Now, this idea should have come from DSA office. Anyway, if there is any difficulty, you should communicate with the DSA office. And DSA office should be there to help the students. And if problems are not solved by the DSA office, then I am always available. And students do meet me. And I think you will agree with me that I am very open as far as students are concerned. In this office, students come and I listen to them. I give priority to my students because we are here because of students. And the information which I get about these students, about these issues which need to be addressed, the first is students themselves. They communicate to me. Today in the morning I got a telephone call from a student that a result has not yet been declared of that particular class. So I gave a call to the controller that what is the issue. So this information, I have given access to the students. They can contact me, they can meet me. They have the right platform of DSA, and they can meet DSA. There are a complete staff available. Then we have the offices, where HODs are sitting, chairpersons, deans are sitting. So they are there not only to run the academic activities, to solve the problems as well. So I would request to all of you that if there is any issue, immediately talk to your teachers who are teaching you in the classroom,
they will communicate those issues to the HOD. But if things are not solved, please do meet your HOD, and your HOD will listen to you and should address. There are many issues, minor issues, which can be resolved very quickly by the HOD. Then, right, each faculty has a dean. There are 10-12 departments, right, under one dean. So, those 10-12 departments, their students, right, and their HODs, they can communicate the issues of the students and other problems, right, to the dean. And dean has so many, right, facilities available, right, and he has the access to me, or she has the access to me, and we can solve those issues. I think if these channels, right, of DSA office, of chairperson, of dean's office, if they are, right, approached in time, problems should be solved. But still, if the problems are not solved, it means there is something wrong somewhere. So then I need to look into that. Excellent. So, student societies, they are often considered the face of any institution. So recently we are seeing there are some harsh policies on event organization. जैसा कि recently ये बताया गया कि ग्राउंड के अंदर कुछ इवेंट नहीं करवाया जा सकता, एक्स्ट्रा करिकुलर या कुछ भी. सर, आपको नहीं लगता कि ये पॉलिसीज़ जो हैं ये सर क्रिएटिविटी को सप्रेस करेंगी स्टूडेंट्स के अंदर, या एक्स्ट्रा करिकुलर्स को ये कम करेंगी? ये तो मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो हमेशा facilitate करता हूँ. I always guide my the staff to provide these all facilities to the students. जो बात आपने की है कि इनको रिस्ट्रिक्ट किया, ये मेरे लिए परेशानी वाली बात है. नहीं, ऐसी कोई, ये किसने आपको बताया? ये आप चेक करें, मुझे बताएं कि ये किस तरह का है, who has miscommunicated. ये जो भी चीज़ें हैं, हमारी एक ही होती है कि जो भी क्लास से बाहर एक्टिविटी उनको इनकरेज करें, नंबर 1. नंबर 2, जो भी आप ग्राउंड है वो उसको आप यूज़ करें एट एनी टाइम. लेकिन जब कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट का कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर, डायरेक्टर स्पोर्ट्स इज देयर, या कोई और फैकल्टी मेंबर, ताकि कोई किसी तरह के बच्चों का आपस में झगड़ा ना हो, उसमें सुपरवाइज हो. यानी कि there should be someone, right, who should be looking after that. These teams are playing, आपकी झगड़े हुए, ग्राउंड के अंदर हुए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड यूज़ ना करें. ये ज़रूर कहा है कि आप जो भी इवेंट करते हैं उसका कोई फैकल्टी, उस डिपार्टमेंट की कोई फैकल्टी साथ हो. डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है वो उसको मॉनिटर करे. डायरेक्टर स्पोर्ट के पास स्टाफ अवेलेबल है, डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टाफ अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है. तो ये है कि जी कम से कम अगर कोई मसला है, 2 टीम में कोई मसला हो गया, तो अगर फैकल्टी है तो फैकल्टी फ़ौरन उस मसले को हल कर लेगी. लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपस में जैसे आपके सामने हुआ है कि झगड़ा हुआ और अच्छे खासे बच्चे जो है ना बीच में जो है ना मसला हुआ, मेरे तक भी पहुँचे हैं, तो ठीक नहीं है ना. इसलिए ये जो है उस वक्त जब ये झगड़ा हुआ है, या एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके हैं, तो उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट्स को कहा है जी कि आप अगर कोई टीमें खेल रही हैं तो आप अपनी फैकल्टी को डिटेल करें. और आई होप कि आप सारे इस पर एग्री करेंगे कि आपके उस एरिया में वैसे खेलते रहें, लेकिन जब कोई मैच है तो उस वक्त कोई बंदे मौजूद हों, ताकि कोई मसला होता है तो वो फ़ौरन उसको रिजॉल्व कर लें. ये रिस्ट्रिक्शन नहीं ना होगी है, और ना ही कोई ऐसा होता है. ये तो बड़ी अजीब सी बात की है. ये किसने कहा आपको जी कि उसके ऊपर पाबंदी लगी है या रिस्ट्रिक्शन है? अगर है तो इसको ज़रा इसको मैं देखूंगा. ठीक है. स्ट्राइक्स में अक्सर सुना जाता है कि कुछ जो स्टूडेंट स्ट्राइक्स होती हैं उनके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ होता है. सर, ये मिथ है या इसके पीछे कुछ रियलिटी भी है? पता नहीं यार, अल्लाह बेहतर जानता है. स्ट्राइक तो होनी नहीं चाहिए. पहली बात तो है कि किसी इदारे में स्ट्राइक होती है, उस इदारे की बदनामी होती है. बाहर मैसेज गलत जाता है, बाहर पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चियाँ पढ़ानी हैं, अगर उनको ये मैसेज है कि 2 दफ़ा हड़ताल होगी, 3 दफ़ा होगी, 10 दफ़ा होगी, तो मैं अगर बच्चे, मैं से कि इस्लामगढ़ में रहता हूँ, तो मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, मैंने उसको दाखिले के लिए पढ़ाने के लिए मैंने भेजना है, तो मेरे पास बेस्ट चॉइस ये है कि मैं मिरपुर भेजूँ. लेकिन अगर मैं एज ए पेरेंट मैं देखता हूँ भाई वहाँ हड़ताल होती है बहुत, यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं, पैसा मैंने खर्च करना है, यहाँ भी फीसें देनी है, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन जो है मैं देखूँ, तो मैं ये करूँगा कि बच्चों को कहूँगा जो सलाम चला लाहौर चले जाओ,
वहाँ जाके एक्स्ट्रा मैं हॉस्टल के जो है ना वो मैं दे दूँगा तो एटलीस्ट जो है वो टाइम पे फारू हो जाएंगे। लेकिन जहाँ स्ट्राइक्स होती हैं उन इदारों की जो साख है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। उसको रिकवर करने के लिए, उस फेम को वापस कर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो बात है कि जी के स्ट्राइक का कल्चर जो है ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ना होना चाहिए, और ये इदारे तबाह हो जाते हैं। तो मैं जो पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ कि आप बच्चे हमारे पास नहीं भेजते, आपके बच्चे दाएँ बाएँ आगे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, तो उनका यही होता है कि जी आप 4 साल की डिग्री 5 साल में करवाते हैं, तो हम बच्चे यहाँ क्यों भेजें आपने? तो ठीक है क्या, राइट? तो पहली बात जो है कि जी के स्ट्राइक जो है इसको हमें सोचना नहीं चाहिए। कोई मसला हो, वी शुड सॉल्व इट टुगेदर। दुनिया में जंगें होती हैं, दुनिया में बड़े बड़े फसाद होते हैं, बेशुमार बड़े बड़े इशू होते हैं, तो उसमें जो मर्जी आप टाइम ज़ाया करें लड़ने में, झगड़ने में, लेकिन रिजल्ट हमेशा टेबल पे बैठ के निकलते हैं, नेगोशिएशन में, बातचीत करने में। तो मेरा तो ये है कि जी कोई मसला हो तो बैठना चाहिए। नाउ ये स्टाफ इसके अंदर लेना जो आपका क्वेश्चन है, ये लोग कहते हैं, लेकिन है कि मैंने डिकोड करने की कोशिश की है, तो मुझे कोई इस तरह का परमानेंट टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नज़र नहीं आया। लेकिन जिससे मुझे पता लग गया कि ये बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, ही विल नॉट स्टे इन यूनिवर्सिटी। ये पक्की बात है, मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता। अगर कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं, और लोग भी कहते हैं कि जी है, तो अपने तौर पे मेरे इन्फॉर्मर्स भी हैं, उन लोगों से पूछता भी रहता हूँ कि कौन से लोग हैं जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो वो कहते हैं जी सर वो इस तरह का है, डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई एविडेंस मिली नहीं जिसमें मैं कहूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसी एविडेंस मिली तो फिर मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा ये जो है ना, सो फार मैं ये कहूँगा जी कि ये एक परसेप्शन है जो कि सही नहीं है। What is the future of Jerica's campus? What infrastructure changes can we see in the near future? जेरिकास कैंपस जो है ये मैं समझता हूँ कि इसमें फ्यूचर इसका इस लिहाज से बहुत ब्राइट है कि अभी हमने सारे प्रोग्राम आस्ता आस्ता इधर लेके आने हैं। अभी 2023 चल रहा है और 2030-2035 में देखेंगे ये सारी जगह आबाद होगी। ये पूरा कुछ जंगल नज़र आ रहा है, दरख्त नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह बिल्डिंग होंगी, और इंशाल्लाह जो है ना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी इधर होगा, ग्राउंड भी होंगे, ऑडिटोरियम भी होगा, और बाकी सारी चीज़ें होंगी। एरिया आपके पास बहुत है, और जो हब है यूनिवर्सिटी का मेन वो यही होगा, और इसी के ऊपर हमें फोकस करना है। और आप ये ज़हन में रखें कि जो हमारे पास साइंस ब्लॉक एक अभी जो है ना मैं उसके ऊपर लगा हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस जून में उसका इफ्तिताह हो जाए, और उसमें हमारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बाकी साइंस के जो है प्रोग्राम इधर आ जाए। उसके बाद फिर हमने जो है वो दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको लेके आना है, और फंडिंग जो है वो हम उसके लिए फाइट करेंगे HHC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और ये जो है इस एरिया को, ये बहुत ज़बरदस्त एरिया है यानी कुछ लिहाज से कि कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो है वो IT पार्क के लिए भी हमने किसी के साथ बात की हुई है, काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ी चल रही है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है, और अगर वो भी हमारा थ्रू हो जाता है तो इसी के अंदर IT पार्क होगा, इसी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर होंगे, इसी के अंदर एकेडमिक ब्लॉक होंगे, और यही एरिया है जो कि आपका 4800 कनाल है, इट्स ह्यूज एरिया। This will turn into an excellent university in this particular area. Right. So, sir, MUST as a whole, where do you see MUST in, let's say, 2070? ये देखें, ये यूनिवर्सिटी जब मैं देखता हूँ कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ एजे के, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। उसकी रीज़न हैं। रीज़न ये है कि एक तो अगर आप देखें तो मीरपुर, बिम्बर और कोटली, ये जो जोन है ना, इस जोन में जो है ना बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, और आज़ाद का सारा जो है ना इस वक्त मैं देखते हैं तो मेरिट जो है वो इन लोगों ने जो है ना उसको उठाया हुआ है। जो बंदा देखते हैं तो जो सारे के सारे जो है बोर्ड की मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन जो है वो इस एरिया की है।
یہ اس لحاظ سے جو ہے نا یہ سینٹرل ایریا ہے. پھر ویسے بھی میرپور شہر جو ہے وہ کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف کہ اٹس رائٹ یو نو مچ اہیڈ آف ادر سٹیز فائنینشلی بھی اور ادروائز بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا جو یہاں کا جو ہمارا اوور آل جو لوکیشن ہے, جو ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے, اور جو اے جے کے کا اوور آل جو ہماری فیوچر گروتھ ہے, تو میں مظفر آباد میں بھی اور راولہ کوٹ باغ میں بھی جب جا کے میری انٹریکشن ہوتی ہے وہاں, تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ یو نو دے لائک دس پلیس, right? They like this place because of its location, because of its contribution, because of its overall many other parameters. تو میرا یہ خیال ہے کہ 2070 تو یہ یونیورسٹی بہت لگے کہ you can see کہ it will be one of the you know excellent universities right in Pakistan. So that's all from us today. So thank you so much again for your time. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, پرابلمس آپ تک پہنچا کے. لاسٹ پر سر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پوری آپ کی ٹیم کا, آپ نے ٹائم اسپیئر کیا, آپ آئے, یہ آپ کا اپنا آفس ہے, اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ میری اپنی یونیورسٹی کے اتنے اچھے بچے ہیں, اتنی اچھی سوسائٹی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. دس از ایکسلنٹ. اور میرا میسیج یہی ہے ٹو آل دی اسٹوڈنٹس کہ اس یونیورسٹی میں جب تک آپ کا اسٹے ہے آپ نیک نیتی کے ساتھ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, کنسنٹریٹ کریں, اپنے جو اپنا پروفیشن چوز کی ہے اس پہ محنت کریں. اور آئی کین گارنٹی یو کہ اگر آپ نے محنت سے کانسیپٹ کے ساتھ ٹائم دے کے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں ہو سکتی. یو ہیو اے برائٹ فیوچر. And only right from my request to all of you is that focus on the academic activities, go into the laboratories, attend your all classes, right? The field which you have chosen, work hard, be honest, be committed, be dedicated to your profession, then sky is the limit. You will be flying high.